Lately you don't feel like yourself, and you can't. सो है गाइस, वेलकम टू चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक हाइपर रियलिस्टिक ओल्ड लेडी ड्रॉ कर रहे हैं। तो बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए हमको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है और क्या क्या टिप्स रहती है, तो वो फुल जानकारी मैंने इस वीडियो में बता रखी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो बने रहना वीडियो में एंड तक, और देखना मैं क्या क्या चीज़ आपको बताता हूँ, क्या क्या टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना है। और हम हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग जब भी करते हैं तो अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है हमको, और उसमें जो डिटेलिंग होती है वो डिटेल पार्ट हमको किस तरह से बनाना है, तो उसी पार्ट पे मैंने ये वीडियो बना रखी है। तो आप वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहना। और ये जो वीडियो था ये मैंने वो शूट किया था, लेकिन एडिट करते समय वो डिलीट हो गया। तो उसके बाजू का जो पार्ट है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो पहले तो मैं पेंसिल का पाउडर निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पेंसिल से डायरेक्ट नहीं बनाऊँगा। इसके लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करूँगा, और ब्लेंडिंग स्टम्प से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प से क्या होता है ना कि वो जो डार्कनेस है वो अच्छे से आती है, और जो भी फेस पे डार्क एरिया था, जो भी वो पोर्शन था, वो मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प से कवर किया है। क्योंकि अगर मैं पेंसिल से करता तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता, और फिर मुझे डिटेलिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने वो पूरा ब्लेंडिंग स्टम्प से किया है। और जो भी मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प से वो डार्क स्पॉट किए थे उसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद क्या होता है ना कि ब्लेंडिंग करते हैं तो उसका जो डार्कनेस है वो कम होती है। और उसके बाद मैं जो भी हाईलाइट्स है वो हाईलाइट्स दे रहा हूँ, और इसके लिए मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो नीडेबल इरेजर आपके पास अगर नहीं है तो आपके पास जो सादा इरेजर है उसको भी आप कट करके इस तरह से यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से आप हाईलाइट दे सकते हो। तो हाईलाइट देने के बाद आपको इसमें जो डेप्थ है इसकी, तो उसके लिए आपको पेंसिल का यूज़ करना है। तो पेंसिल का यूज़ करके आप वो डेप्थ दिखा सकते हो। तो इसी तरह से हमको डिटेलिंग करती जानी है। तो देखना आगे मैं किस तरह से डिटेलिंग करता हूँ, तो बने रहना वीडियो में तक। Lately you don't feel like yourself, and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. There's a feel you're getting lost, the feel you're trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. Caught up thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell, now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Read me those signs, but they lost the meaning. I know something isn't right, see the demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you're getting lost, I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Won't you tell me now? You never answer when I call. I can
yourself and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say तो ये गाइस इस तरह से हमने एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग की है। तो मेरे चैनल पे वो और भी वीडियो है जिसमें मैंने बहुत कुछ टिप्स बता रखे, तो वो भी वीडियो आप जरूर जाके देखना। और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। और अगर आप कुछ शेडिंग के बारे में रियल वीडियो आपको चाहिए, कुछ ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना, मैं इस तरह से भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on.